Hello everyone, very welcome to ixamBee. And today I have Mr. Sethu, and he has cleared RBI Grade B exam. This is a landmark achievement. Many congratulations. And he is 2014 graduate mechanical engineer, has been also preparing for UPSC, and today he has made it. We will get to know what is the rank, what are the marks. Let's wait for some more time, but because today the result has come, so I thought this is a great opportunity for many of those who want to understand how the preparation goes through. So Sethu, thank you very much, and many congratulations. It's a big achievement. Thank you, sir. So I'm really pleased to talk to you here. And what I thought, because I know many people will have many questions, but before that, let me play a rapid fire with you. So this rapid Okay. fire will help us understanding you, how your preparation has been going. So let's keep that in a straightforward way. So how many years you have been preparing? About 5 to 6 years now. 5 to 6 years. And which all exam you have been preparing? I actually prepared almost all the exams in the market, Okay. starting from UPSC, RBI, SEBI, Nabard, and all that. So Banking UPSC exam. and RBI CB Nabard and any other exam, because RBI CB Nabard normally are Yeah, like CGL. I prepared for CGL, State PSC, Railway, everything. a railway exam also you have. So what has been your success in different exams? Actually, in UPSC, I wrote two mains. Hmm. Then in SBA PO, I reached till interview. Then I was out. SBA clerk, I got it. Then in SEBI, I reached till interview this year. RBI, previous year, I reached till interview. Hmm. Then IDBI assistant manager, I got that. Yeah. That's it. All right. And how about RBI Grade B? How many attempts you took? Actually, this is my second serious attempt. Okay. Previous year and this year. Previous year and this year. So in the first attempt, what has been your success in RBI Grade B? First, matlab, previous year. Yeah, previous year. Previous year I reached till interview, but interview marks are very low, so I was out of that. Oh, but excellent that in the first attempt also you could reach to interview. So those here the learning is there are many people those who are watching this, they went up to interview stage but could not make it final. So guys, you need to learn it here. So even if you missed it, you still have opportunity. So Setu is the inspiration. We'll get to know the marks of this year this very soon. But can you tell what was the last year interview marks? Interview marks is 12 marks. 12 marks. But I know 12. people, those who got 1 marks and still they could Yes, make. Last year, yes, yes. I know. So this year yet to come. Okay, how much credit you will give to your hard work, strategy, and luck? So three things: hard work, strategy, and luck. Out of 100, you have to give some percentage to these three. Actually, I will give equal to three of them because in each stage I missed out because something or other, luck was not there, strategy was not there, or hard work was not there. So these three I will credit in equal measures, I think. Wow, equal. Interesting. I was thinking it will go more to hard work, but happy to hear that because somewhere all these three are very important. Okay, when you first decided to prepare for RBI Grade B, because earlier you were doing UPSC, how this idea of RBI Grade B came into mind? After I wrote UPSC in 2018, I was pretty sure that I will not clear because I was unable to clear completely write the papers. Hmm. So I think it's time to move on and think of another any other good opportunity. And as we know, RBI is the next big thing after UPSC. So I decided, and I was also very much interested in this economics. So naturally, I attempted. My the direction go towards RBI. It's a natural progression for me. After you failure of UPSC, let's try for RBI. Okay, you said it is a natural choice, but if I ask you two, three reasons why RBI Grade B after UPSC? Actually, after UPSC, I could not. I wasted 4 years, and I was unable. I cannot get any other job in private sector or something else.
And I wanted a good government job. So RBI was the choice. There is no special thing that this is the so RBI is the choice. It's naturally I went to it. And also one more reason is that UPSC during UPSC preparation I was concentrated only on UPSC. So I kept all my eggs in one basket. Yeah. That was an issue. With RBI, I can simultaneously try for SEBI, Nabard, and other banking exams. So anyhow, I will get any job if I prepare for RBI. I know that, so I go for RBI, and here I am. Absolutely. So this is a strategy here. Now I am asking a very different question. Whom you call as your role model, and you may call two, three people, but I am asking for living people. So you can't say that Lord Krishna or Mahatma Gandhi are my role model. So among the living people, if you have to choose two, three role models, who inspire you? actually, actually, this Nitin Kabat of Saroda inspires me, and Okay. Dhirubhai Ambani, our great Ambani sir, inspired me because they came from zero Yeah. and they reached there. It's more than just passing some random exam and becoming civil servant or RBI, but I think that's more of a quality that I look in a role model. These people who in the midst of uncertainty they can achieve this far. So I think these are my role models. Amazing. So you have been moved by entrepreneurship because you named both of them great entrepreneurs. Because in India, becoming a successful entrepreneur is very difficult. So full credit will goes to them. In the condition like India, they become so successful. Okay. Coming to RBI Grade B preparation, what is the toughest thing in RBI Grade B preparation? The big preparation, I think current affairs. This current affairs is lot of mugging up. It's nothing like UPSC. So I was like mugging up packs and all that. So that gave me some initial, and also by this phase one quants and reasoning. Hmm. That's also a tough nut to crack for me. No, this I am hearing from a UPSC candidate. Normally, I used to think for UPSC people, this general awareness is a cakewalk. UPSC, it's all about interconnections. All that. A lot of mugging up is not required. I think Yeah. that's different. Current affairs of RBI is we need conceptual clarity, but mugging up is also required. Hmm. So we have to. What was your first response this year when the paper was made 50% descriptive for ESI and FM? Actually, that time I was preparing for a SEBI, and I was just preparing for SEBI, and I thought I will get into SEBI, and I have not. Have not. I There is no need for another attempt in RBI, so I will satisfy with SEBI. So I didn't think that this descriptive is there. I will be out. So I just don't take that seriously because I was preoccupied with SEBI and all that. And after SEBI's mains, I concentrated on RBI. Then there was no time for self-reflection because 2-3 weeks after there was exam. So I just went with the flow. So, but you were like happy that now the 50% is descriptive here. This is my cup of tea. I, being a UPSC aspirant, can do it better than most of the others. Actually, my greatest challenge in UPSC was I am not able to write the complete paper. My Yeah. speed was not that much. So in this was around 50%, and also the word limit was very high. So I was little pretentious that I could this year also RBI will be dream will only become dream, and I will not achieve it. So I was pretentious. I was not that it is my cup of tea. I didn't take it that way. But you made it. That's great. If you get another opportunity to change your preparation strategy for RBI, what will be that? What will be one or two change? Previous year, I just took my interview as not too seriously. I thought that average mark I will get average mark 30 to 35 or 40. I will get that, and I will clear. I just took interview as I didn't take interview so seriously. But that was a fault because each of the phases, I think we have to specifically give the importance that phase deserves.
So this year I prepare for interviews with that much focus and give that much seriousness to interviews. So I think that was the one mistake I should have avoided in the previous attempt, taking interviews lightly. Yes. My last question, where I'm ending the rapid fire, is what are you going to do till the joining time? How you are going to chill out now? I have to meet my family members and friends because I lost touch with them, especially after I joined in SBI. SBI and preparation, I was preoccupied, so I was not able to give them time. So I think I will chill out with my friends and family. Oh, so this point we have not covered yet. So now let me start from the beginning, that you have already joined SBI. So now let's wrap up step by step. So after 2014, if you can summarize how you have been doing for UPSC, then how the challenges, struggle, learnings, then you move to other exams, including banking exams, IBPS, SBI, you said. And actually, you mentioned in between that the strategy of not putting all the eggs in one basket. I absolutely agree with that because in career, the journey is lifelong. So, depending on the situation, depending on the opportunities, we have to have a strategy. So, can you elaborate on that? And then I will come to specifically RBI grade B preparation. Actually, after college I joined civil service preparation because there was no other job opportunity for me because I was from an average student from a self-financing college with just an average GPA. So I thought, why not give civil service and I'll figure out what comes next. And my first mistake was that I choose maths as my optional. I After graduation, I think that I was very well prepared in maths, but that was not the case. That sadly I realized after 3 attempts. Then I switched to political science, and fourth attempt, political science, I got good marks, around the 280 marks I got. But GA, I was not able to complete the paper, and the marks were down. So I think that enough is enough. I will move on, and I then prepared for all the exams that came my way, starting from SBA clerk to RBI. And in 2019, I got this SBA clerk post. Then Corona catastrophe struck us. Then life became once again a stagnancy. Then after Corona, SEBI came. Then I wrote SEBI. Then RBI came. Then I wrote RBI. Now, actually, I was in a dilemma to prepare for Nabard and ICAR. I have to prepare. I was just devastated from this. How should I prepare one more year and all Hmm. that? Because I was not that hopeful in clearing this RBI Grade B. It was there is a contentment now that I have not to prepare for an Nabard or ICAR or any other exam. I just have to chill and concentrate on my work in RBA. I think. But you have been preparing this along with your job, right? Yes, yes. So, how Along the this time job, management is done? I got job in 2020 actually. 2020 batch was. Okay. Uh, so after when I got into job, my base was clear because I had gone for RB interview before that, and my UPSC preparation. My base was almost clear. So Hmm. remaining time I give to preparation, and that was enough for me. So I am now, Sethu, I am now reading some of the chat questions also simultaneously because otherwise at the end it shall not be too many for us. And there are more than 100 congratulations messages. So Thanks, congratulations thanks, on behalf of all the audiences. You will read them thanks. after the session. You may read and Okay, reply also. okay. It will be helpful for people. So Sure, sure. Abhishek and Ritvik, some of them are asking, you are only graduate, and does the academic matter? Because you mentioned that you were average also in your study. So how does it happen? All that in interview. What do you say on that? Actually, this year interview was a little. That is before just before my interview. The candidate was my friend only. He was 2020 SBA topper, All India Hmm. topper. Yeah. And just after me, a guy was there uh, who completed his master from IAS Bangalore, IASC Bangalore, then gone for PhD in Germany.
and did 6 months of postdoc there, and then अच्छा. come back and then came back and prepare for UPSC, and just so he gives this RBI and went for interview. So in between this SBA clerk, an average student was going with self-financing college with average GPA. So he was little pretentious, but so that was these interview panels are all by interview, whether be SEBI or RBI. To- they uh, they asked me that why so much gap, and what happened to this, and I think I was able to convince them somewhat, because I was engaging in MA Political Science during this preparation, and I was also writing something on internet, and I was taking UPSC aspirants coaching classes, online coaching classes. So I was engaged in all this. So I think that convinced them that I was not simply sitting ideally and preparing for this one exam. Hmm. So that's, I think, that worked for me, I think. So it's better to do something when you are preparing for exam, and especially if the gap is long. ठीक है, तो it makes sense. And अभी से sorry, आकाश was saying, सर आप हिंदी में बोलिए ना, तो ठीक है हम थोड़ा हिंदी में बात कर लेते हैं। और मैंने सेतु से पूछ लिया था, सेतु भी हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल है। तो बात करते हैं अभी आरबीआई ग्रेड बी की। एंड आपने बोला कि आपके लिए क्वांट भी चैलेंजिंग था और रीजनिंग भी चैलेंजिंग था, क्योंकि पहले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो कैसे इस चैलेंज को दूर किया, कैसे आपने स्पीड को मेंटेन किया, बिकॉज इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है और हम सबको मालूम है कि फेज 1 क्लियर करना अपने आप में चैलेंज है। फिर मैं Uh, बताइए। uh, एक्चुअली मैंने 2016 में एक बार आरबी दिया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओके। तब मेरा फेस वन बहुत ही खराब था। मुझे तब रियलाइज हुआ था कि मेरा फेस वन इतना बुरा है, इसलिए मैंने आरबीआई का ख्वाब ही छोड़ दिया था और यूपीएससी में लगा रहा था। आफ्टर 2018 मेंस के बाद मुझे लगा कि मुझे अगर नौकरी चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। दैट वाज माय लोएस्ट पॉइंट। सो मुझे और कोई रास्ता ही नहीं था। सो मैंने यूट्यूब वीडियोस और एक और कोचिंग सेंटर जाने के भी मेरे पास मैं पेरेंट्स को डिपेंड करना पड़ता था। सो मैंने सोचा कि नहीं, चलो जी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। मेरे पास तो मुझे अपने हार्डवर्क और परसिवरेंस में बहुत ही विश्वास था। अगर मेरे इंटेलिजेंस में नहीं तो हार्डवर्क और परसिवरेंस में मुझे बहुत विश्वास था। तो मैंने यूट्यूब वीडियोस निकाला और यूट्यूब वीडियो से दिन रात मैंने ये क्वांट्स रीजनिंग सब कुछ करने लगा। मैंने फर्स्ट NIACL AO का दिया था, फर्स्ट बैंकिंग। तो बहुत ही खराब था, मैंने सेक्शन 2 डिजिट नंबर भी नहीं निकाल पाया रीजनिंग में। देन धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव होते गया एंड दिस प्रिपरेशन एक वक्त के बाद हमें खुद लगता है कि हाँ, अब एग्जाम क्लियर करने का क्वांट्स और रीजनिंग का पकड़ आ गया है। वैसे में यूट्यूब वीडियो से ही देखकर उस लेवल पर आ गया। देन फिर हो गया। सो ऐसा यूट्यूब वीडियोस था मेरा प्रिपरेशन का सोर्स। और RS अग्रवाल की न्यूमेरिकल्स किए कि नहीं किए? RS अग्रवाल मेरा यूपीएससी प्रिपरेशन के बाद बुक पढ़ने का, ये कोचिंग के लिए बुक पढ़ने का ये निकल गया, क्या बोलते हैं, जरूरत ही निकल गया। मुझे क्या यूट्यूब वीडियोस में थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी मिलता है, फिर पढ़ाई भी हो सकता है। सो मैं उतना ट्रेनिंग नहीं होगा, सो बुक नहीं पढ़ा, सिर्फ यूट्यूब वीडियो ही किया। ओके। एक आकाश ने पूछा है कि आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हिंदी में भी होता है, तो मैं बता देता हूँ, ये होता है हिंदी में। वो अलग बात है कि सेतु ने इंग्लिश में दिया था, बिकॉज दैट आई कैन गेस। हिंदी में भी देने के अपने चैलेंजेस हैं, स्पेशली अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं हो तो अभी आते हैं कमिंग टू द फेज 2 प्रिपरेशन। बिकॉज यू बीइंग एन इंजीनियर, और आपने तो थोड़ा बहुत कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, फाइनेंस तो शायद नहीं पढ़ा होगा, मैनेजमेंट भी शायद नहीं पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी बिकॉज ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ा हेल्प रहा हो, वहां पर ऐसे राइटिंग वगैरह रहता है। बट ओवरऑल हाउ दिस फेज 2 प्रिपरेशन हैपेंड, उसमें कौन सी चीजें आपको लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर रही, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने पड़े, फाइनेंस आपके लिए नया सब्जेक्ट रहा होगा बिल्कुल, उसमें कैसे किया, और भी कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं।
एक्चुअली मेरा फेस 2 एक्चुअली इजी था। फेस 1 और इंटरव्यू ही टफ था। अच्छा। फेस फेस 2 कैसे, मैंने यूपीएससी में इतना वक्त गुजारा है, तो इकोनॉमिक्स मेरा मेरा एक इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मेरा एक क्या बोलते हैं, पसंदीदा विषय भी है। सो हम्म। मैं ये न्यूज़ और टॉक्स जैसे फेमस इकोनॉमिक्स जैसे रघुराजन और ये लीला त्रिपाठी, और इसका टॉक्स मैं सुनता ही रहता था, जस्ट जस्ट फॉर फन। हम्म। तो फिनेंस एक मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई जैसे मैंने सोचा था फिनेंस में और ईएसआई में। काफी दिक्कत तो मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि करंट अफेयर मकअप करने में ही पड़ी। वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में दिक्कत नहीं हुई मुझे, सच बोलूं तो। ओके, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली जो करंट अफेयर्स मकअप करना है और वो जो आरबीआई के लिए स्पेशली गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स और उनके हम्म, बहुत सारे डिटेल्स, वो लास्ट ईयर एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया था। मुझे भी लगता है कि उतना हम्म, गवर्नमेंट स्कीम में पूछा था वो एक्सेप्शनली ज्यादा था। हाँ, वो डेफिनेटली चैलेंजिंग है। मतलब आई थिंक मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज मैं भी ऐसा मानता हूँ कि मेमोरी उतनी शार्प नहीं हम्म, है। एंड बट इंटरेस्टिंग टू नो दिस। और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हाँ, इंटरव्यू बहुत चैलेंजिंग होता है। और क्योंकि आपका गैप भी था और आप फिर काफी साल से तैयारी कर रहे थे, तो आपको क्या प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू में, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? बोर्ड कितना मतलब कॉर्डियल था, या बोर्ड बहुत आपको स्ट्रेस में डाल रहा था? कितना लंबा इंटरव्यू चला, किस तरीके से शुरू हुआ, कैसे आपने उसको मैनेज किया? और लास्ट ईयर क्योंकि आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम थे, तो डेफिनेटली आपने अच्छे से तैयारी करी थी, तो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में काफी जानना चाह रहे हैं लोग। क्योंकि मॉक टेस्ट तो हम बना देते हैं फेज 1 और फेज 2 का, लेकिन मॉक इंटरव्यू बनाने में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है। और रियल इंटरव्यू यू हैव डन मॉक इंटरव्यूज आल्सो, तो कैन यू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल? एक्चुअली मैंने इस साल इंटरव्यू में क्या किया थी कि मैं बायोडेटा काफी अच्छे से प्रिपेयर किया। और मैं हम्म। प्रीवियस ईयर में मेरे साथ एक गलती हुआ कि मैंने हॉबी का एक कॉलम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है आरबीआई के बायोडेटा में। अच्छा। सो लास्ट में ऐसा लिखा है कि एक कॉलम है कि हम्म। डू यू वांट आरबीआई टू नो समथिंग और समथिंग लाइक दैट। सो हम्म। वहाँ हर बंदे हॉबी लिखता था, मुझे मालूम नहीं था प्रीवियस ईयर। हम्म। तो मेरा हॉबी तो मुझे बहुत पकड़ है, मेरा रीडिंग में मैं बहुत रीड करता हूँ, स्पेशली फिक्शंस। सो वो डाल देता तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता था, पर मैं पिछली ईयर यह गलती किया कि मैंने नहीं डाला। सो मेरा बायोडेटा निकाले तो सिर्फ गैप ही गैप निकल आता था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरा ब्लैंक ब्लैंक और गैप और 2020 में। सो एंड पिछले वर्ष वो हमारा ट्रस्ट इंटरव्यू था ना, सबका ट्रस्ट इंटरव्यू, मुझे लगता है मेरे भी ट्रस्ट इंटरव्यू था। सो मैं कुछ बोल नहीं पाया, ठीक से हम्म। प्रेजेंट नहीं कर पाया, वो सब था। मुझे मालूम था कि वो सब है। तो इस वर्ष मैंने क्या किया कि वो हॉबी का कॉलम में मैं रीडिंग फिक्शंस डाल दिया। अच्छा। और मैं फिक्शंस मैं रीड करता हूँ, और उसमें से मैं बहुत तैयारी भी की। और ईसीजीसी का भी मेरा इंटरव्यू था हम्म। 2 दिन पहले। सो उसमें मैंने हॉबी ये रीडिंग डाल दिया था। उसमें से 1984 का बुक पूछा, मुझसे पूछा था कौन सा बुक पसंद है। मैंने बोला कि 1984 पसंद है, वो जॉर्ज ऑरवेल का। तो उसमें से बहुत क्वेश्चंस आ गए, हम्म। स्पेशली रिलेटेड क्वेश्चंस, इसी करंट इवेंट्स में रिलेटेड क्वेश्चंस। पेगासस हो गया, वो सब हो गया ना। तो मुझे पता लगा कि आरबीआई में भी ये चांस है। और हम्म। उसमें सो मैं जॉर्ज ऑरवेल का 1984 में कुछ प्रिपेयर किया। और मैंने एसबीआई का वर्किंग प्रिपेयर किया। So, मैं अच्छा। एसबीआई में कैशियर में था ना। हाँ। तो मेरे स्ट्रैटेजी था कि मैं किसी भी तरह ये डाल दूं कि एसबीआई में मैं कैश और कैश मैनेजमेंट करता हूँ, तो कैश से क्वेश्चन आएगा। और हम्म। मैं कैश से फेक नोट कर कैसे ये वो सब मैंने आरबीआई तैयार के किया। लोगों और को कैश के बारे में बात करने में बहुत मजा आता है, यस यस यस, बिकॉज दैट्स आरबीआई में शायद ही कोई ऑफिसर होगा जिसने कैश में काम नहीं किया होगा। शायद ही, एक्सेप्शनली हो सकते हैं। आई रिमेम्बर फर्स्ट पोस्टिंग तो इशू डिपार्टमेंट में हुई थी, एंड दैट एक्सपीरियंस वी रिमेम्बर फॉर लाइफ, क्योंकि ना वो एक अलग ही काम है। मतलब काम हमने और भी डिपार्टमेंट में किया, लेकिन वो कैश में जो काम करने का मजा है और जो टेंशन है, मतलब हम तभी के टाइम में सीबीपीएस में 18-20 करोड़ रुपए डेली के डेली
स्प्रेड कर देते थे, मतलब इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क ऑल्सो, बट वो याद रहता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन द अर्ली डेज ना। तो आपने जो बोला कि कैश के बारे में बात करने में ना टॉपिक बिकम वेरी इंटरेस्टिंग, और दूसरा आपने फिक्शन की बात कर ली, तो ये जो बेट आपने दिया ना इंटरव्यू बोर्ड को, दैट इज ए गेम चेंजर। आई थिंक सो, बट इंटरव्यू के मार्क आने के बाद ही पता चले कि वो था क्या, या हाँ ये बात मुझे तो है। पता हम्म, नहीं। या देखते हैं। या। तो इसमें लोगों का एक दो प्रश्न तो मैं डील कर सकता हूँ, बोल रहे हैं आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, वो हमको मिल जाएगी, आप अपने ixamBee पे जाके डाउनलोड कर लीजिए और आपको पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे। आकाश है ना? तो प्रदीप पूछ रहे हैं आपकी एज क्या है, बट मुझे लगता है कि मैं सेतु से क्वेश्चन पूछना नहीं चाहूंगा, एंड यू कैन गेस, अगर आप गेस करना चाहते हो तो एज से कुछ, हाँ वो सेतु लग रहे हैं कि बिकॉज ही इज शेविंग हिज बियर्ड एंड ऑल दिस, बट डोंट वरी, ठीक है? तो सेतु इज मच यंगर देन मी है, बिकॉज आई एम क्लीन शेव्ड हियर। बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा ये तो क्या कहते हैं, सेतु तो लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। यस, ही हैज एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ हिज स्टडीज, राइट? तो अच्छा, अगर आपने मेंस एग्जाम के, एक दो लोगों ने लिखा है सैन, उनका पूरा नाम नहीं आ रहा है, कि मेंस एग्जाम के लिए आपने किस तरीके के स्टडी मटेरियल, किस तरीके की बुक्स की तैयारी की अदर देन द यूट्यूब वीडियो? एक्चुअली मैंने एजुटेप का कोर्स किया था हाँ पिछले वर्ष, और इस हाँ। वर्ष भी एजुटेप का कोर्स मैंने किया था। अच्छा। और उसमें से ही मैं बेंच का सब निकाला। मैं किसी बुक और कोई बुक और वो में नहीं पढ़ा, सिर्फ हाँ एजुटेप का कोर्स पढ़ा, और हाँ। सम यूट्यूब वीडियोस भी देखे। ओके। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया फेस टू अच्छा, फेस। यूपीएससी की प्रिपरेशन, इसमें एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे अभिषेक का, कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कितनी हेल्पफुल हुई आपको ये आरबीआई के मेंस एग्जाम में? यूपीएससी का प्रिपरेशन शायद मेरा सबसे बड़ा मेरा ताकत रहा आरबीआई के एग्जाम में। ओके। क्योंकि यूपीएससी में फेज टू में बहुत सारा मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ, इंटरकनेक्शंस हो गया, हम्म। और इंटरव्यू में भी मुझे इंटरकनेक्ट करके बोल पाया। ये सब मेरे यूपीएससी के ही प्रिपरेशन से हुआ है। बाहर से सब कुछ सबको लगता है, शायद सबको लगता है कि 5 ईयर मैंने खराब किया यूपीएससी में, क्या हो गया। बट मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मैं कैसे मेरे कैरेक्टर को यूपीएससी ने चेंज किया, विच इज इंटेंजिबल एसेट। सो मैं किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि इंटेंजिबल नहीं है ना वो। मुझे खुद में इतना खुशी है कि मैं यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मेरा एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है मेरे कैरेक्टर का यूपीएससी प्रिपरेशन से। दैट आल्सो हेल्प मी इन आरपीए फेज टू। Yeah, and it has not only helped you in cracking the exam, but the, as you said, you have been transformed, all these studies, whatever you have learned in all this preparation. In addition to the knowledge you have got, lot of personal trait, means the resilience, the patience, ability to sustain, do the hard work. So you have gone through that grill, and that you are going to carry forever. So that Yes will sir. make you, like today also you have actually, you have made a big success, you have cracked the exam, but you are still coming out very humble, very composed, very calm, क्योंकि आप उस ग्रिल से निकल गए हो, आप उस ग्रिल में काफी टाइम जा चुके हो, तो उसका उसका रिफ्लेक्शन अभी भी दिख रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग इन द करियर। We Thanks sir. understand Thanks. that, we understand that. So this is interesting chat, Setu. I think the experience you have shared is very very interesting. So there are some questions keep coming, but as I suggested, because today you will be getting a lot many call from your family, friends, other people, so I won't take more of your time. Some of the queries you may later reply on the chat, maybe tomorrow or day after tomorrow, whenever you're free, because today it is your day, it is your time to celebrate. It is like a big achievement, because this is changing the path of your career. After a few days we will do a session about how joining happens and all this, so we will send all this detail over email, so we may interact there for more discussions. I'll be happy to talk on that, and really I'm thankful on behalf of all the audience. For 1 minute, Yeah. I forgot to give credit to the ixamBee interview panel, Okay. because previous year, this is not a paid promotion, so I genuinely I am
thanking, because previous year my marks was too low and I was low on confidence. So this year's panel, CP Joshi sir, I don't know his name. If I am sir CP and madam. Joshi. Okay, sir. No, sir. No, sir. I We are know, because nowadays I am sometime on and off on my interviews. We have Dr. Sharma also. We have Sushil Dr. Rai sir Sharma. Yes, also. Dr. So Sharma those, and yeah, one more ma'am, and their Prachi ma'am, feedback actually, uh, one one Prachi ma'am, SBA में Arnula SBA के से नाम. एसबीआई से आया था ना, एसबीआई में बहुत अच्छा, बड़ा पोजीशन में था, हाँ वो मैम. एसबीआई में आई एम थिंकिंग, बिकॉज मे बी बहुत सारे हमारे पास मल्टीपल पैनल चल रहे थे, तो दिस टाइम व्हाट वी डिड, वी वर हैविंग मल्टीपल पैनल्स. तो पैरेलल हम इंटरव्यू चला रहे थे बिकॉज देयर वर वेरी मेनी कैंडिडेट्स. बट आई विल डेफिनेटली कन्वे दिस मैसेज टू मैम and That gave Dr. me Sharma. very much confidence. Yeah, That actually helped. so that gave you confidence, and because you were also working in SBI. No, no, that not their feedback on my interview, that I was well read and I am articulating well. Even if they said to pacify, I don't know, but that actually helped me to boost my confidence, because my interview confidence was very low. Their feedback on my interview session actually boost my So confidence. anything specific from that feedback which you feel was helpful? Yes, I was actually self-doubting about my articulating style and my thinking ability and all that, because of these constant failures. Some two very high position members telling me that I am very articulate and my thinking, I have brought knowledge in something, that actually boosted my confidence and remove my self-doubt. That's very very encouraging for me. Oh, thank you for saying this, Sethu. And we, out of our experience, so we in an exam, we there are faculty members much more experienced than me. So all of us understand that it is, as you said today, no, your hard work, your strategy, and your time, your luck, all have been equally important. So we understand that being positively motivated is very important, not only for cracking the interview but for anything in life. So this is very important part of any coaching, any guidance we give, and boosting the confidence so that you bring the best out of you. That is what we do at ixamBee. And it has helped many of the students. It has helped personally to us also, like in our career we have faced different kind of tough time, as you mentioned. So I was remembering my time when I got selected. That time I was also doing my PhD, so I was thinking whether I will get selections or not. Then when it started, I got multiple. So this is like a real life experience for most of us. So that's how we share also during the interview discussions or all live classes whenever we do, because we believe that these personal experience help bringing the best out of us. And that the reason maybe probably you agree to spend time today with us, despite I understand you may have, like, I don't know whether you are going to sleep today or not. I don't know, because it happens, right? So you may be much more calm and composed, so you may get good sleep. But because of the excitement, because of the achievement, and it's there. So even if you don't sleep tonight, it's absolutely fine. This is your time to enjoy the way you want to. From our side, on behalf of all iXambi members, on behalf of all the audience, we wish you very good luck, best career wishes. Keep shining. You are going to make a career working with the central bank of the country. All best wishes from our side. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thanks for your time.